cooking will go on. I will keep asking questions to all the chefs in between. So मैं जिसका भी नाम लूंगा, Amul team will unmute that person. So बीच-बीच में हम बातचीत भी करते रहेंगे and cooking भी साथ में करते रहेंगे. Chef Amul, can you hear me? Yes. Yes, ma'am. Can you hear? Yes, ma'am, I can hear. Okay, see, I have to tell you something that. Yes, please. Hello. So yes, we are live on Facebook. If you all can see, we are live on Facebook. So let's rock the show. So we'll start formally now. Thank you so much, Amul. Thank you so much, all the participants who have joined us today. And I'm going to repeat few things. It's a great opportunity for us during the lockdown that has united us today. और आज हम मिलकर कुछ बहुत सारे chefs across the country will be cooking two dishes. One dish is a cheese burst pizza sandwich. पिज्जा बहुत टाइम से खाया नहीं है, तो आज बहुत मन कर रहा है खाने का, और घर पे पिज्जा बनाने का मजा ही कुछ अलग है. और जो सेकंड डिश है वो है, अमूल ने भी एक डिश लॉन्च की है अभी रिसेंटली, दैट इज गोल्डन मिल्क, जिसको हल्दी दूध बोलते हैं. अमूल ने भी एक टेट्रा पैक में उसको लॉन्च किया अभी कुछ ही दिन पहले. सो ऐसा ही सेम डिश हम घर पे बनाने वाले हैं, विच इज ऑल्सो कॉल्ड गोल्डन मिल्क. हल्दी से, दूध से, देसी घी से, जिसमें थोड़ा सा जिंजर जाएगा, एंड that would help us building immunity, better health, which is the need of the hour today because of the corona and everything that is going on. So in all these we have been hearing a little negative news, ye ho raha hai, wo ho raha hai, corona chal raha hai, but this event is a ray of hope. हम सब आज साथ में जुड़े हैं, जो कि हमें पहले कभी मौका मिल नहीं रहा था एक साथ जुड़ने का. So I'm really thankful to all of you who have joined, and let's rock the show. So अब हम शुरू करने वाले हैं अपनी कुकिंग. एक बार इंग्रेडिएंट्स सबको फिर से दिखा दें. इंग्रेडिएंट्स जो आज हम यूज करने वाले हैं वो है अमूल बटर, अमूल चीज स्लाइस, अमूल पिज्जा चीज, अमूल मिल्क एंड कैप्सिकम, अनियन, टोमेटोज, जिंजर, बटर, टर्मरिक, सिनेमन, पास्ता, पिज्जा पास्ता सॉस, ऑरिगेनो एंड थोड़ा सा मजा. सो चलिए शुरू करते हैं. आई होप सबके इंग्रेडिएंट्स रेडी हैं, चॉप्ड हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हमें क्या करना है, आप ब्रेड स्लाइस लीजिए. ब्रेड स्लाइस पे आप चीज स्लाइस ओपन करके रखिए. Everybody can see me. So cheese slice, you can take one pack. So आप cheese slice open करें. cheese slice ब्रेड पे रखें. ब्रेड को बंद करें. उसके बाद पिज्जा सॉस लें. पिज्जा सॉस को आप जैसे जैम यूज करते हैं वैसे ब्रेड पे स्प्रेड करना. That would be the base for this dish. पिज्जा सॉस को अच्छे से स्प्रेड कर लें. Is everybody with me? इसको अच्छे से सारी साइड्स कवर कर लें, just like we do it on a pizza. So is it done? देखिए आप अपनी अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं.
So you can see हमने अभी तक क्या किया है, हमने अभी तक ब्रेड ली है, ब्रेड पे चीज स्लाइस रखा है, उसके ऊपर सेकंड ब्रेड स्लाइस रखा है एंड देन उसके ऊपर पिज्जा सॉस लगाया है। इसके बाद हम प्लेस करेंगे अपने इंग्रेडिएंट्स, अनियन जो आपने पहले से चॉप करके रखे हैं, स्लाइस करके रखे हैं, जस्ट लाइक इट इज अ पिज्जा टॉपिंग, जैसे आप पिज्जा की टॉपिंग करते हैं, द सेम वे यू हैव टू पुट इट। आप थोड़े से अनियन रखें, थोड़ी कैप्सिकम, सम टोमेटोज। कुछ लोग टोमेटोज पसंद नहीं करते हैं पिज्जा में, सैंडविच में, सो इट्स देयर चॉइस, इफ दे वांट टू कीप इट दे कैन। आप चाहें तो कॉर्न भी ऐड कर सकते हैं, सो दैट वुड गिव अ कलरफुल लुक टू इट, ग्रीन, येलो, रेड। इसके ऊपर हम करेंगे पिज्जा चीज ग्रेट। पिज्जा चीज ग्रेट करने से पहले थोड़ा सा ब्लैक पेपर इस पे स्प्रिंकल कर लें आप। I hope people have pizza cheese with them today. In case नहीं है, they can keep, किसी को अगर पिज्जा चीज नहीं मिला है, they can keep another cheese slice on top of it. So that's a substitute. थोड़ा सा पेपर डाल लें, black pepper. Take the grater and पिज्जा चीज को अच्छे से उस पर स्प्रेड कर दें, so that it is fully covered. थोड़ा ज्यादा कीजिए, so that जब ये मेल्ट हो तो चीजीनेस आए, जैसा आप पिज्जा में देखते हैं, चीज बर्स्ट पिज्जा के अंदर आप डोमिनोज में, पिज्जा हट में ट्राई करते हैं, उसको इवनली हर जगह पे स्प्रेड कर दें। Everybody is there? Can they listen to me? Chef Amit Joshi, Chef Amit, Mr. Abhishek, Chef Amit से बात करना चाहेंगे। Hello. Hi Chef, are you with me? Hi. I'm almost done, chef. Here's the Almost done, pizza okay. that you've told me. Yes sir. बात करते हैं अब हम यंगेस्ट शेफ निनाद पुरी से। शेफ निनाद, जितना ज्यादा चीज होगा उतना बेटर रहेगा। Hello. Hi Ninad, how are you? Good. How is the preparation going on? साथ में है? So now you can see पिज्जा उस पे ग्रेट, पिज्जा चीज उस पे ग्रेट कर दिया है। एंड अब आप पैन लीजिए, एंड पैन में थोड़ा सा बटर आप डालें। अमूल बटर पहले से मेल्ट करके रखा है। एंड प्लेस कर दें अपने चीज बर्स्ट पिज्जा को।
इसको मेल्ट होने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, सो यू कैन कवर इट अप, बट बीच में आप थोड़ा सा देखते रहें। सब मेरे साथ हैं? सो बात करते हैं अभी हम शेफ सौमिक चैटर्जी से। शेफ सौमिक, Good morning, sir. How are you? गुड। Good आप morning, इसे sir. ढक दें, आप इसे ढक दें सो दैट ये जल्दी मेल्ट हो जाए। इट वुड टेक 3 to 4 minutes। कैसे हो शेफ? हाउस प्रिपरेशन? Very good. It's a great initiative to be here. And it's तो a great. आप मेरे साथ हैं, आपने उतना तक कर लिया है? Yes, sir. Great. So I can see Rahul Sharma has also done it. You can keep your dish video. अभी उसको हमने कवर करके रख दिया है। आप सब अपना वीडियो ऑन रखें so I'm that just putting the- I can see, all others can also see on Facebook Live. So it's almost अभी रखा है हमने, थोड़ा सा टाइम लगेगा, at least 3 to 4 minutes to get it melt. और साइड बाय साइड हम अपना इम्यूनिटी ड्रिंक जो है, दैट इज द गोल्डन मिल्क, उसको तैयार कर लें। सो हमने सॉस पैन रख लिया है। उसके लिए हमें अमूल मिल्क चाहिए 1 cup. आई एम मेकिंग फॉर 1 person, सो आई एम टेकिंग 1 cup. इन केस आप घर में ज्यादा लोगों को सर्व करना चाहते हैं इम्यूनिटी ड्रिंक, यू कैन टेक। Two cups. So we have Amul दूध। अमूल दूध पीता है इंडिया। When it's done, इसमें थोड़ा सा आप half a spoon देसी घी डाल सकते हैं। Cinnamon stick and the main ingredient for golden milk is turmeric powder, 1 tablespoon, which will give that golden color to it. And on top of it, आप जिंजर को ग्रेट कर सकते हैं इस पे। जिंजर ग्रेट कर दें। अगर आपके पास तुलसी है, आप तुलसी भी ऐड ऑन कर सकते हैं। आपके पास गार्लिक है, आप गार्लिक भी थोड़ा सा क्रश करके इसमें डाल सकते हैं। If you want to add sugar to it, you can add sugar. In case you don't want to add sugar, आप इसको नेचुरल रखना चाहते हैं, आप इसमें हनी ऐड कीजिए। मैं हनी ऐड करने जा रहा हूँ 1 tablespoon, which will give that natural sweetness to it. It's an Ayurvedic drink and a very famous drink across India and even in the world. इस लॉकडाउन के दौरान ये डिश बहुत लोग यूज कर रहे हैं। इस ड्रिंक को बहुत ज्यादा पिया जा रहा है। आप इसको तब तक करने दें जब तक इसमें 2 बॉयल्स नहीं आ जाते। जस्ट लाइक यू मेक टी। So you can see that golden color coming up. Though it is yellow, but it's called as golden drink.
because it has many health benefits. Let it boil. तब तक हम देखते हैं पिज्जा चीज अभी मेल्ट नहीं हुआ है, हो रहा है. नीचे से जो है वो क्रिस्पी हो जाना चाहिए, क्रस्ट थोड़ा हार्ड हो जाए. Just about to melt. चीज थोड़ा सा और डाल लें. जितना ज्यादा चीज उतना बेटर रहेगा. The golden milk also has come to one boil. We'll take 2 boils. So चलिए उस बीच बात करते हैं जब तक चीज मेल्ट होता है. Chef Ranit is there. Chef Ranit. Yes, am I audible? Yes, sir. Good to see Okay, you. great. Okay, Yes, so the young chefs are also cooking. Yes, meet my youngest one. He is Palvit, okay? And just wait. I have 2 slices for my 2 Great. babies, okay? Right, And right. the milk is almost going to boil with some honey, turmeric, and some basil. Great. Yeah. So we'll talk to Malvinder ma'am. Malvinder ma'am is there. No. Okay, we have Miss Prachi is there. Miss Prachi. Ms. Prachi, please start your camera. Good morning, sir. Good morning. How are you? I can see Fine, sir. the milk is almost ready, Yes, and sir. pizza sandwich is ready. Yes, sir, it's ready. Okay, great. Wow. So अब हम चलते हैं शेफ सुगाता के पास. Back to Kolkata. Chef. So the milk is ready. You can use the strainer So to my strain it. milk is ready. Great. Pizza is on the induction. Great. So the milk is ready. You can see that rich golden color. You can use a spoon to strain it so that the flavors of cinnamon, ginger, turmeric, ghee can be there. So it's good to have this milk when it is hot. So the milk is ready. So one of the dish is ready, and the second dish is also done.
Let's pick it up. It's crusty. So the milk is ready, and just getting the pizza done. Pizza sandwich is almost ready. So बात करते हैं Chef Geetika Joshi से. Chef Geetika is there. Yes, sir. Milk is So ready. my second dish is also there. I had done 2 slices now. One is cooked by my wife also. Sandwich is almost ready. बात करते हैं Chef Geetika Joshi से. Yes, sir. So ma'am, done? Yes, I can see the milk is ready. Pizza is Yes, also sir. almost done. I'm straining the milk and milk is ready. Great, ma'am. And now we'll go to Mr. Prashul Kumar from Patna. Mr. Prashul Kumar. प्रशूल कुमार जी प्लीज आपका कैमरा ऑन कीजिए. Prashul Kumar is there. Okay, we'll go to Mr. Anup Rana. Mr. Anu, please start your camera. I would request everyone to keep their cameras on. Only then we'll be able to take the screenshot of the dish and your selfie as well. So dishes are, I can see, almost ready with everyone. My second dish is also ready. Mr. Anup Rana is on stream. Hi sir, how are you? Yes, Anurag. I'm fine, Anurag. All the best for today's session. I'm enjoying you, while sir. watching. Unfortunately, I'm like in that area where I'm not able to, arrange the things. But I'm just learning while seeing you together. Great, sir. So we have seen Mr. Somik Chatterjee has done the plating as well. So please keep your plates ready now. So it's almost 11:24. By 11:30 would be able to finish. So keep your plating done. So I'm just keeping my plates also ready. Side by side मैं आप सबसे बात भी कर रहा हूँ. अब चलते हैं हम. Mr. Saurabh from MP. Hi Saurabh, how are you? Saurabh, can you hear me? Saurabh, can you hear me? So your dish is ready? Plating is done? Great. So एक बार जब सारे ready हो जाए, please, we'll be ready to take the screenshot then. Ashutosh sir, I think everybody has done this, and keep the plates ready. We'll go to Ms. Renu Agarwal. Ma'am, please switch on the video. Ms. Renu from Missouri.
So the thing is ready. On top of it, you can add oregano. If you have it available, you can pour oregano on top of that. And also chili flakes. If you like it chili, then you can add on, otherwise it is optional. So I like chilies, so some chili flakes on top of that. And you can serve it with ketchup if you like it. Plating is done. Soumik sir, plating is done. So I am seeing a wonderful platings done by Mr. Gashrola, UP, Praveen Mishra. Very good. Sudhanshu is done. Alisha is done. Sonali from Fagwara is done. Soumik sir is done. Mr. Atharv Dangat from Pune is done. Harjinder is done. Sumit Tiwari is done. Good, good, good. Very good. So we are able to do it on time. Before time. Kindly keep the videos on so that the screenshot can be taken. There are many participants जिनका video on नहीं है. Please keep your video on and your plating done. So I'm sure everybody is done now. Please, one more request, switch on the video. We have Mr. Vineet from Patiala. Mr. Vineet, please switch on the video. Ms. Himani Gupta, Mr. Sumesh, Ms. Nikita from Pathankot, Mr. Sahil, Mr. Inderpal. Please video on रखें. Abhishek sir, are we ready to take this screenshot? Yes, we can start, sir. Okay, so kindly keep your dishes and focus on the dish that you have done so that a screenshot can be taken all together. So I would start in next 5 seconds. Please keep the Sure. screens clean. So we are live on Facebook. So in next few seconds, screenshot will be taken. Focus on the dish.
It is completed. It is completed. Great. And now one more selfie, holding your dish in your hand. Jigsaw is done. Just 1 minute. Very good. I can see many people holding their dishes in their hand. Thank you so much for joining with us today. We are almost done. So let Amul team take the screenshots, and all these screenshots would be displayed in the groups that we have made. If anybody has missed sharing their screenshot, they can post their screenshots in the group so that Amul can make a collage of it, and it will be shared to you by their team shortly. It will be displayed on Facebook page as well, and in the group also. So Sir, we entire are live. completed with the screenshots. Great, sir. So anybody who has missed, they can put a message in the chat. अगर किसी का miss हो गया है screenshot आना. Great, I can see one by one everyone. They have done it wonderfully. Very nice to see young chefs, students, faculty of entire LPU across the country. Wow, great. So all done. Thank you so much everyone for joining with me today. And we really hope that you stay safe, stay at home, cook at home, and make these wonderful dishes, जो कि बहुत आसान है, and build better immunity, better health. That's the need of the hour. So thank you so much. Now we are leaving. Take care. Bye-bye. Namaste.